So today, children, we'll be starting with pure functions and impure functions. A function which returns a value. Can you see the paper on which I have written? A function which returns a value to its caller method is known as a pure function. It is also called as accessor method, and it doesn't change the state of an object. Write it quickly. A function which returns a value to its caller method is known as a pure function. It is also called as accessor method, ACCESSER, as it does not change the state of an object. Now, what do you mean by state of an object? I'm giving an example. There is a class ABC in which I have made a function int show int a. Here I am doing a equals to 2 into a plus 5, return a. The value of a is being passed as parameter and it is being changed in the function. Public static void main string args. ABC object. I am declaring an object of the class ABC. Then I am doing what? I am declaring an integer variable p and initializing 5 into it and an integer variable k. I am calling ob.show function. This is a static function. This is a non-static function. We have discussed this earlier also. A static function can call a non-static function of a class only through the object of the class. अगर ये भी static function होता तो directly call कर लेते. अब इसमें we are passing p as parameter and the return value will be stored in the variable k. This is the function call statement. After this, if I am going to print actual arguments equals to, what are the actual arguments? Actual argument is the argument which is being passed from the calling function to the called function. So p is the actual argument and a is the formal argument. If you have seen the videos, then this point must be clear. ये function call है. Function call में actual argument कौन सी होगी? जो हम pass कर रहे हैं. And formal argument कौन सी होगी? जो यहाँ से यहाँ पर receive कर रहा है. Actual argument equals to p. Then if I write here value of variable after function call, जो रिटर्न हो रही है वो k में रिटर्न हो रही है, ये मैं प्रिंट कर रही हूँ. सी अब ये p की वैल्यू जो 5 है वो कहां पर जाएगी? a के अंदर. a will be 5 and it will be changed to 2 into 5, that is 10 plus 5, that means 15. a will become 15 and 15 will be returned from here and 15 will be stored in the variable k. So after the execution of this program, what will we have as output? Actual argument equals to 5 and value of variable after function call equals to 15. जो वैल्यू एक्चुअली गई थी उसमें वो थी 5 और चेंज हो गई 15 हो गई एंड 15 आकर k में स्टोर हुई है. p के अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है. दैट मींस एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट के डिफरेंट वैल्यूज है. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है. दैट मींस वी आर कॉलिंग बाय वैल्यू. फंक्शन कॉल बाय वैल्यू आपने पढ़ा था. फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस आपने पढ़ा था. फंक्शन कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट की अलग अलग वैल्यू होती है. इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द फॉर्मल आर्गुमेंट्स, they are not reflected back in the actual arguments. अगर कोई भी यहाँ पर चेंज किया गया है a के अंदर तो वो p में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है.
यहां से रिटर्न किया गया है a में, डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर किया है. So this is a pure function. A pure function always returns a value and it does not change the state of an object. These are the 2 points. It returns a value and it does not change the state of an object. इसको underline कर लीजिए pencil से. These are the 2 points of pure functions. It always returns a value and it does not change the state of an object. Changing the state of the object means when actual arguments are being passed into formal arguments, any changes made in the formal arguments will not reflect back in the actual arguments. P की value 5 ही रहेगी. It will not become 15. Had it been called by reference, then P and A must have been sharing the same memory location. जब same memory location share करते हैं, तो अगर A की value change हो रही है, तो P की value भी change हो जाएगी. Okay? Is this point clear to all of you? Any doubts here? You can ask me here. After that, I'll be discussing impure functions. Any doubts to anybody? Ash Rani Khan, are you there? How 15 this A value is coming in K? Whenever we return a variable from a function, the calling statement के left में we will have to assign a variable to it and it has to be of the same type. अगर यहाँ इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो k भी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होना चाहिए. जो रिटर्न वैल्यू होगी वो आकर k में स्टोर होगी. ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है. This is function call by value and returning a value from a function. Okay. ठीक है. तो a की वैल्यू इस केस में आपको प्योर फंक्शन में ये देखना है कि p की वैल्यू और a की वैल्यू सेम हो है या नहीं है आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ a. अगर a की वैल्यू चेंज करने के बाद p की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज अ प्योर फंक्शन. एंड अ प्योर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू. जो भी वैल्यू चेंज होती हैं उसको रिटर्न कर देते हैं और एक नए वेरिएबल में स्टोर करते हैं. क्लियर? Yes, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Now to impure function. Put the next heading, write it. Impure functions. They are, write quickly children, also called mutator method. They can cause a change in the state of an object. An impure function may or may not return a value. Pure function में it is compulsory to return a value. Impure function में it may return a value or it may not return a value. It depends. Written? So I'm giving an example of an impure function here, class ABC. I am writing here void show int x. I am passing an array. P equals to x dot length. For I equal to 0, I is less than p, I plus plus. X at position I equals to x at position I multiplied by 2. That means every element of the array x is to be multiplied by 2. Done? Have you written? So I'll turn the page. Yes, ma'am. Take a screenshot. Take a screenshot quickly and you can write it later.
After this, SOPLN, the change during function call. This is the message which will be printed, and the array is going to be printed here. For I equals to 0, I is less than p, I plus plus, SOP, x at position I with a space. And we are ending the for loop here. We are ending the function here. Next comes public static void main. String args, you can write it yourself. Int a, I am declaring another array here, and I am initializing certain values here. 3, 6, 8, 9, 15. 5 values. So this array will be of size 5. I am taking few more variables here. J, Q. Q equals to a dot length. Now the class name was ABC. उसका object बना रहे हैं हम. ABC equals to new ABC OB equals to new OB. Then I am calling the function OB dot show, and I am passing the array here. Arrays are always passed by reference. That means the memory locations of array A and the memory location of array X will be the same. Same memory location के दो नाम हो जाएंगे. Clear? अब इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, कॉल करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं SOPLN elements after function call. FUNC for I equals to 0. यहाँ पर J लिया हुआ है वेरिएबल. J is less than length. Length के लिए Q है J plus plus SOP A at position J plus a space. Function and main. Main is closing and class is closing here. So look here, what is happening? We start the execution from main. In main, we are initializing these values to the array A. जैसे ही array A में values initialize करते हैं, तो memory के अंदर एक array create हो जाता है sequentially like this. A at position 0 में 3 initialize हुआ, A at position 1 में 6 initialize हुआ, A at position 2 में 8 initialize हुआ, A at position 3 में 9 initialize हुआ, and A at position 4 में 15 initialize हुआ. This is how the array will be created in the memory and the values will be assigned to them. Now Q equals to A dot len. Q equals to 5 because the array size is 5. We are calling this function. So what is happening? OB dot show. This is the function call. कौन सा कॉल है ये? कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि एरे पास कर रहे हैं. तो ये एरे ए कहां जा रहा है हमारा? ये हमारा जा रहा है एक्स के अंदर. जब कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो सेम मेमोरी के दो नाम हो जाते हैं. दैट मींस इसको हम x at 0, x at 1, x at 2, x at 3 एंड x at 4 से भी रेफर कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को. Is this point clear to all of you children? Anybody who has doubts here can ask me. अगर नॉर्मल वेरिएबल भेजते हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल में as the actual argument, then it is function call by value. But if I send a class object or if I send an array, then it is call by reference. It is pass by reference. We always pass an array and a class object by reference. Automatically it is passed by reference. हमें उसमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है. और हमें यहाँ पर सिर्फ a लिखना है, सिर्फ array का नाम देना है, आगे कुछ ब्रैकेट्स नहीं लगने हैं. This is one common mistake which many students make. While passing the array by reference, do not put brackets in front of it. Just write the array name. Is there any doubt to anybody here? Pass by reference कैसे करना है? Should I move further? Aditi? Okay, Suha. So let's move further. So I have passed this here. What is happening in the function now? जैसे ही function call हुआ, we go to the function. इसमें भी p की value क्या है? 5 and 0 से लेकर less than 5 तक. That means पूरा array चला रहे हैं. And x at position I equals to x at I to 2. Every element has been multiplied by 2. So we are changing these elements. What will these elements become? This will become 6. This will become 12. This will become 16. This will become 18 and this will become 30. In this same memory location,
सो जब यहां पर हम प्रिंट करेंगे द चेंज ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, फंक्शन के अंदर, तब क्या प्रिंट होगा? वैल्यूज प्रिंट होगी 6, 12, 16, 18 and 30. And once we return from this function to the main function, elements after function call, जब यहां पर array print करेंगे a वाला, see a जो array है that is local to main and x जो array है that is local to the function. So इसमें जब printing करेंगे तो x के नाम से करेंगे, इसमें जब print करेंगे तो a के नाम से करेंगे, लेकिन same values print होंगी दोनों बार. So what is happening over here? When we have an impure function, this is an impure function क्योंकि इसका कोई return type नहीं है. ठीक है, कोई return type नहीं है. It is not changing any, not returning any value. So the state of the object is changed. जो original values थी a की, जो हमने यहां से पास की थी as actual parameters, they are being changed in the formal parameters. Because the formal parameters were changed, the actual arguments की values भी change हो गई हैं. So this is called as an impure function and ये pass by reference में ही होता है. Two things you should remember for impure functions. They cause a change in the state of an object and they may or may not return a value. These are the 2 points which you should remember in impure functions. So many a times a question is asked, differentiate between pure functions and impure functions. 2 points I've told you here, 2 points I've told you here. This is what you have to write. Have you understood this much? Any doubts here? I can stop here and explain again. Anyone? Unmute yourself and ask your doubts. Any doubts? You can write in the chat if you don't have any doubts, children. How will I come to know? No doubts. Okay. Let's move further. Function overloading. Okay, Alina and Komal. We come to function overloading. Overloading, as the word suggests, का क्या मतलब है? एक फंक्शन जो बहुत सारे काम कर सके. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैलकुलेटर. 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उनके साथ हमें एडिशन भी करना है, उनको मल्टीप्लाई भी करना है, उनके साथ हमें डिवीजन भी करना है और उसके साथ हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है. हम 4 अलग अलग फंक्शंस बनाए, उससे अच्छा ये नहीं है कि हम एक ही फंक्शन बनाए. बताइए, फंक्शन ओवरलोडिंग का कोई एग्जांपल बताइए. क्या इससे हो सकती है फंक्शन ओवरलोडिंग? या वॉल्यूम वाला क्वेश्चन ले ले. वॉल्यूम निकालना है हमें क्यूब का, देन वॉल्यूम निकालना है हमें क्यूबॉइड का. ये वाला ले लेते हैं क्वेश्चन. दिस इज सिंपलर, फॉरगेट अबाउट दिस. Volume of cube, then volume of cuboid, then volume of cylinder. Formula of volume of cube is? Come on, tell me what is the volume of cube? Komal? Are you still sleepy? Side cube, yes. Side cube. What is the volume of cuboid? Volume of cuboid. Length into breadth into height. What is the volume of cylinder? Pi r square h. See, here we will be requiring only one variable. Here we will be requiring 3 variables. Here we will be requiring 2 variables because pi is constant. So when the same function can be used to do multiple tasks, then it is called as function overloading. But how do we differ in the functions? The difference will be in the number of arguments or the type of arguments. This feature of function overloading is an example of polymorphism. Polymorphism is the process of declaring functions with the same name but for different purposes. The same function volume can be used to calculate the volume of cube, can be used to calculate the volume of cuboid, and can be used to calculate the volume of cylinder. Isn't it? But the difference in the parameter list differentiate these 3 functions during function call. So please write the definition. I am dictating it to you.
function overloading is the process of defining functions oblique methods with the same function names but with different number and types of parameters. For example, if I take the same example, I'm declaring a class, say V. Then I'm declaring a function volume in which I am passing a float type of side. This function is also returning a float value. Here I am returning side cube, side into side into side. I am not using another variable. I'm directly returning this. This is the first function. Second function which I have declared here is float volume again, and I am passing length, breadth, height. Float L, float B, float H. And here I am returning L into B into H. This is the function definition. The third function is volume of cylinder. The name of the function is same. See, always the name of the function is same. Here I am declaring float R, float H. Here I am returning 3.14 into R into R into H. These are the definitions of the three functions in public static void main. If I declare a float variable VOL, and if I write VOL equals to, here also V का object बनाएंगे, class का object बनाएंगे, तभी तो call कर सकते हो उसके function को. If I call ob.volume, the compiler will get confused कि कौन सा call करना है. If I simply write ob.volume, the compiler, how will the compiler know कि कौन सा function call करना है? तीन functions बने हैं same program में with the same name. So by seeing the parameters, the compiler will come to know. If I'm passing one parameter like this, then it will call the first function. If I'm writing the same thing. I'm here declaring volume 1, volume 2, volume 3, three variables. If I am passing two parameters, let me say 5.1 and 8.2, then it will call the third function. And if I am passing three parameters, then it will call the second function. So seeing at the parameter list, the compiler attaches itself to the function. In this case, the first function will be called. In the second case, the third function will be called. In the third case, the second function. So this parameter list is very important in case of function overloading. अब इसमें तो मैंने सारे float लिए हुए हैं. ऐसा भी हो सकता है कि दो functions ऐसे हों जिसमें एक ही parameter हो. एक में integer type का parameter हो, दूसरे में float type का parameter हो. That is also possible. So the compiler will match the parameter कि वो integer type का parameter है या float type का है. So argument list जो है, जो parameter list है, that can differ either in the number of arguments like this or the type of arguments. Return type का कोई मतलब नहीं होता है function overloading में. Return type same हो या ना हो या void लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. We only see the number of arguments and the type of arguments. This is how functions are differentiated by the compiler. Have you understood this? After this, if I print SOP volume 1, it will print the volume of cube. If I print SOP
Volume 2, it will print the volume of cylinder. If I print SOP volume 3, it will print volume of cuboid. This is how we call the various functions in function overloading. Have you understood this, my children? Any doubts to anyone? Just one topic is left in the chapter, that is recursion. So I'll quickly finish it and next time I'll do practicals with you. Recursion बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है रिकर्जन के ऊपर एंड क्लास 12th में 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं रिकर्जन पे, इसलिए बहुत अच्छे से सुनिएगा. राइट इट. अ फंक्शन डिजाइन्ड इन सच अ वे, a function designed in such a way that it calls itself in its body is called recursive function. Example लिख रही हूं मैं यहां पर. A function that calls itself in its body is called as a recursive function. Write it fast, children. See, this is a recursive function program I've made here. You can take a screenshot and copy it later. I'll show you how it is running. Public static void main से हमारा execution शुरू होता है. What I'm doing here, I've initialized a variable k with the value 5 and I've taken f. कुछ भी नहीं है f के अंदर. A का ऑब्जेक्ट बनाया है, A is the name of the class. इसके थ्रू हमने fact function कॉल किया है and we are passing k as parameter. So k will go in n. n will have the value 5. If n double equals to 0, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर दो 1. 0 का फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए. अदरवाइज रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1. तो देखिए इस स्टेटमेंट में जो नीचे वाला स्टेटमेंट है उसमें मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं 5 इंटू एंड वी आर कॉलिंग द फंक्शन विद इन इटसेल्फ लाइक दिस. दिस फैक्ट फंक्शन के बॉडी के अंदर एक बार फिर से वो कॉल हो रहा है 5 इंटू फैक्ट 4 n माइनस 1 मीन्स 4. सो जब 4 होगा तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी. क्या वो 0 है? नहीं है. इट विल अगेन गो टू द एल्स पार्ट. अगेन इट विल रिटर्न जो n की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो और फिर से फैक्ट फंक्शन कॉल कर रहा है. इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज कॉलिंग फैक्ट 3 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 विद द हियर. ठीक है. सो नाउ इट इज 3. इज इट इक्वल टू 0? नो. सो इट विल अगेन गो टू द एल्स पार्ट. इट विल अगेन रिटर्न. ये तो पहले से है, यहां पर लिखेंगे 3 इंटू फैक्ट 2. So now n becomes 2. Is it equal to 0? No. It will again go over here. It will again call the fact function after multiplying 2 fact 1 like this. Is it equal to this? Now n is equal to 1. Is it equal to 0? No. It will again go to the else part. So now here it will be writing. We'll be writing like this 1 into fact 0. अब 0 हो गया n की वैल्यू. क्या ये 0 है? हाँ है. तो नाउ इट विल रिटर्न 1. जब रिटर्न 1 करेगा तो लूप में से बाहर आ जाएंगे. इस एल्स पार्ट में नहीं जाएगा. जब वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा. दैट मीन्स अब ये क्या रिटर्न कर रहा है 1. तो ये जो वैल्यू है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये इस फंक्शन से रिटर्न होगी और वो कहां जाकर स्टोर होगी? f में. तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120 will be printed. I'm giving you this simple example of recursion of factorial in which the function fact is being called in the body. Fact function दोबारा से कॉल हो रहा है इसी बॉडी में. जो पहला कंडीशन दी होती है that is called as the base case.
base case. Base case is that condition which determines the exit from the function. हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन कितनी बार चलेगा ये डिपेंड करता है बेस केस पे. जैसे ही बेस केस ट्रू होगी वी विल एग्जिट फ्रॉम द रिकर्सिव फंक्शन. समझ में आ गया? और अगर बेस केस फॉल्स होती है तो बार बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता रहेगा. जैसे ही ट्रू होगी वैसे ही रिटर्न कर देंगे. This is how a recursive function works. We will be learning about this in detail in the chapter recursion. For now, just remember that a function which calls itself in its body is called as a recursive function. Have you understood this much, children? Any doubts here? To anyone? Any doubts here? Nobody? See, when we return from here, तो ये जो return statement है ना, जिसके अंदर पहले से ये सारी values है, वो सारी values f के अंदर आ गई. So next statement में when we are printing factorial of, this is the message, k की जगह क्या print होगा 5 and equal to sign, then f की जगह print होगा the value of this. That means 120. Recursion वाले प्रोग्राम में जो भी ये values होती हैं, ये सब stack के अंदर store होते हैं, stack के अंदर store होती हैं. और जब ये बेस केस ट्रू हो जाता है तो स्टैक में से एक एक करके वैल्यूज निकलती हैं और इनका जो भी आंसर होता है वो रिटर्न हो जाता है कॉलिंग स्टेटमेंट में. दिस इज हाउ इट इज डन. दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द चैप्टर रिकर्जन. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट अ फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन एंड जस्ट वन एग्जांपल यू लर्न. दैट्स ऑल. Any other doubts? Soha? So this is all for today. Read the chapter and next time we'll be doing certain programs on this chapter. Thank you, children. Whosoever was recording, please send it on my mail ID. If it is